Hello students, in this part we will study about the digestion of food. How is the digestion of food take place in a human being? What is the starting process and how it can be accomplished digestion of food? The food is taken in our body, ingestion is by the buccal cavity. The food is taken by the organism through buccal cavity. It is also known as oral cavity. Oral cavity show dual function. Oral cavity show dual function. Which one? First, it has to masticate the food, and second one is facilitation of swallowing. The first, it masticating the food, and the second in facilitation of swallowing. These are the two functions produced by the oral cavity. In oral cavity, with the help of teeth, tongue and enzyme, saliva, masticate mix the food and change it to bolus, that is called masticating. In oral cavity, teeth, tongue and saliva lubricate the food and change into a bolus. बोले तो फूड का जो मास उसको गोले के रूप में तब्दील कर देना. बोलस, मास ऑफ फूड या फूड मास. मिक्सिंग इट, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेटिंग. यानी टीथ, टंग एंड सलाइवा के द्वारा फूड को, सलाइवा क्या करते हैं, फूड को लुब्रिकेट कर देती है, मुलायम स्मूथ कर देती है, वेट कर देती है, जिसकी वजह से इसको निगलना आसान हो जाता है. एंड एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ टंग, this is engulf. The tongue help in engulfing, swallowing the food. यानी टंग की सहायता से फूड जो बोलस के रूप में बना था उसको हमने इंगल्फ कर लिया. दिस प्रोसेस कॉल्ड डेग्लूटिशन. दिस प्रोसेस is called deglutition. What is deglutition? Swallowing of food. फूड को निगल लेना, that is called deglutition. Saliva. Saliva इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है. वैसे तो आपने you have already studied about salivary glands. There are three pairs of salivary glands: parotid, maxillary, submaxillary or mandibulus, and illinguals. Saliva is secreted by salivary glands in oral cavity. We have already discussed about salivary glands. There are three pairs of salivary glands: parotid glands, submaxillary or mandibular glands, and illingual glands, which secrete the डिफरेंट एंजाइम्स. और इसके अंदर मेन जो एंजाइम होता है, वैसे तो क्या क्या कुछ है,
सलाइवरी अमाइलेज है, इसको टाइलिन बोलते हैं, लाइसोजाइम है, एज वेल एज कुछ माल्टेज भी कंटेन होता है। सलाइवा कंटेन salivary amylase known as ptyalin, lysozyme and maltase। इनमें जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये सलाइवरी अमाइलेज जिसकी पीएच वैल्यू 6.8 के आसपास होती है, ये क्या करता है, पॉलीसैकेराइड जो हमने फूड इनगल्फ किया है दैट हैज मेनी मोनोसैकेराइड चेन, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे कि सेलुलोज वगैरह कंटेंट उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। उस पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में यानी दो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड के हों उसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी माल्टोज के अंदर। द सलाइवरी अमाइलेज, द पीएच ऑफ salivary amylase is 6.8 and it converts the polysaccharide cellulose वगैरह जो हैं, there are huge या long chain of monosaccharides into disaccharide, जिसके अंदर मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल कंटेन हो, तो डाइवोर्स भी बोलते हैं, डाइसैकेराइड। तो प्रोसेस क्या हुई, पॉलीसैकेराइड इसमें सलाइवरी अमाइलेज, पीएच की दृष्टि 6.8 change it to disaccharide। Now we have studied that in oral cavity saliva is secreted by salivary gland, but there are some organisms in which salivary amylase or saliva is not present। Those are called just like as cow, buffalo and carnivore animals just like as tiger and lions, but the saliva is present in the pig। There are the following animals such as cow, buffalo, or carnivores, lion and tiger not contain saliva। Pigs secrete the saliva। Clear? Then the bolus, the food, the mass food is engulfed into the pharynx. The process engulfing of food that is called deglutition। After that, the food is entered into the esophagus, pharynx से होगा esophagus के अंदर। In esophagus, food moves with the contraction relaxation of food pipe। That movement of food is called peristalsis movement। In esophagus, the food moves by the contraction and relaxation of फूड पाइप कह सकते हैं एज वेल एज एसोफेगस कह सकते हैं।
This type of movement is food in esophagus is called peristalsis. The movement of food in food pipe is called peristalsis movement. And after that, from esophagus, the food enters into the stomach through a sphincter that is called gastrovesicular sphincter जिसको बोल सकते हैं, या gastroesophageal sphincter. After that, the food enters into the stomach through the gastroesophageal sphincter. स्टोमक के अंदर एंट्री करता है. ये था हमारे ऑरल कैविटी के अंदर. टीथ 4 टाइप्स के होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. So different types of teeth that makes the heterodome. And after that, the food enters into the stomach. In stomach, there are 3 types of particles arises. There are 3 materials present. Which one? First one is HCl, hydrochloric acid, an enzyme, inactive enzyme, pepsinogen, as well as mucus, which is secreted by the inner layer of the stomach, जिसको आप क्या बोलते हैं? gastric gland. In stomach, the gastric gland secretes the gastric juice, which contain HCl, hydrochloric acid, inactive pepsinogen, and mucus. These are the substances present in the stomach, which is secreted by the gastric gland, या gastric जो ग्लैंड के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस मिल रहा है, उसी में से इन बेबी के अंदर रेनिन भी कंटेन होता है. इन बेबी रेनिन is also secreted by gastric gland. बेबी के अंदर मिल्क जो फीड करता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है, उस मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करने में काम कौन करता है? रेनिन करता है. दिस रेनिन helps in digesting the milk protein in baby. Clear? Then what role of HCl? HCl makes the acidic media. एसिडिक मीडिया कितना है? इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.8 के आसपास. स्टोम एसिडिक मीडिया इन स्टोमक एंड in presence of HCl, the inactive pepsinogen
enzyme converts into the active pepsine, and this pepsine start to digest the protein in stomach. This pepsine start to digest the protein in stomach and convert the protein into proteases and पेप्टोन्स, इसमें कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले इनएक्टिव क्या था हमारे पास, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन इसमें जो प्रोसेस हुई वो क्या था, इनएक्टिव, इसको HCl जिसकी पीएच कितनी है 1.8, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन के अंदर, और ये पेप्सिन कैसा हो गया, एक्टिव। ये पेप्सिन एक्टिव होने के कारण से हमारे फूड में जो प्रोटीन थी, ये पेप्सिन उस फूड की प्रोटीन को प्रोड्यूसेस एल्पेक्टोन में कन्वर्ट कर देगा। देन प्रोटीन पेप्सिन और कौन सा, एक्टिव, कन्वर्ट इनटू प्रोड्यूसेस प्लस पेप्टोन। ये काम है HCl का एंड पेप्सिनोजन का। उसके साथ साथ म्यूकस क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द इनर लेयर ऑफ स्टोमक एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स द इनर लेयर ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl. If the HCl exceed in our stomach, it start to degenerate, it start to decompose the inner lining of stomach and may cause internal bleeding. This type of disease is called peptic ulcer. You have also write these words after that. What? Which one? Mucus which is present in inner lining of stomach. This mucus layer prevents the inner lining of stomach from the HCl effect. If the amount of HCl is exceed, the inner lining of stomach is start to decompose, degenerate, the internal bleeding start. This type of disease is called peptic ulcer. In stomach, the food remains 4 to 6 hours, and here it converts, it mix churning के साथ, it churning and mix with the water form a solution, and this solution is called chyme. Clear?